Good morning. It is 11 a.m. and welcome to this next edition of Facebook Live with me, Gopal Kamath. Quick introduction. My name is Gopal Kamath. I'm a business coach and we run a consulting firm where we work with companies to help them improve their performance in multiple areas. Normally, we work, our Facebook Live sessions are around the topics which are of interest to business owners. But today, for a change, we want to talk about something which is more specific to employees. Um, this session will be in two languages. हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में बात करेंगे so that a wider audience can get benefited from this. Um, I would suggest that if you are attending this session, make your notes. Of course, you can always visit this video again, but you could make your notes. सेशन जब चालू रहेगा तो आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एंटर करें. जैसे ही इनिशियल टॉपिक के ऊपर का डिस्कशन हो जाता है, I will visit those questions and I will answer those questions in this Facebook Live. जैसे मैंने कहा, मैं दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषाओं में टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा. Wherever you have a question, टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें. जैसे ही मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं उसे इस सेशन में रिप्लाई करूँगा. So, once again, welcome and let's move forward with this session. Session का topic है 5 successful employee habits. यानी जो हैबिट्स अपने सक्सेसफुल एम्प्लॉयज में देखे जाते हैं वो क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एवरी कंपनी हैज़ अ फ्यू एम्प्लॉयज who are treated slightly differently from the others. When I say treated differently, everybody knows that ये manager का प्यारा है. They know that management likes this person a lot. They know that if the entire company gets a certain percentage of pay hike, उसको शायद थोड़ा ज़्यादा मिलता रहेगा. When there are certain interesting assignments to be done, he's the person who gets picked up. So in English, this is sometimes called as a blue-eyed boy. It's like, the person who is most loved by the management or the manager. इट इज़ देयर इन एवरी कंपनी. ऐसे एम्प्लॉयज़ हर एक कंपनी में रहते हैं जो ज़्यादा फेवरेट्स रहते हैं मैनेजमेंट के या मैनेजर के. तो हम इस सेशन में बात करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से ये मैनेजर या मैनेजमेंट के फेवरेट हो जाते हैं. मेरे करियर में मैं एज एन एम्प्लॉय भी काम कर चुका हूँ और पिछले 10 साल से एज अ कंसल्टेंट मैं अनेक कंपनियों के साथ भी काम कर रहा हूँ ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स. तो ये ट्रेंड मैंने हर एक जगह पे देखा है और ये ट्रेंड के पीछे मैंने देखा है कि कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं या कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये फेवरेट्स हो जाते हैं. So we will touch upon these favorite behavioral aspects of these employees who rise above the rest of the others in terms of being able to get quicker promotions, higher pay raises, better assignments, better visibility, faster growth. So, what are these
behavioral aspects, and I want to share with you based on my experience. So let's jump into those. So today I'm going to talk about five key things which I have seen, which are done by these successful employees. So number one, the first and the most important thing which I have seen commonly among these successful employees is they know how their job connects to the company's goals. नंबर एक, ये जो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज हैं इनको मालूम है कि इनका जॉब जो है कंपनी के गोल से कैसे कंपेयर करता है, कैसे कनेक्ट करता है. So, regardless of what is the grade of that person or what is the level of that person, he knows exactly कि मेरा जॉब कंपनी के गोल से कैसे कनेक्ट करता है. To take an example, if the person say is working in sales, he knows that the sales target for the company is say 100 and my target is 5. He knows exactly that his 5 contributes to the 100, and he knows that if he does his 5, how it contributes to the company, regardless of what the issues are around it. कोई भी उसके रिलेशन में उसे प्रॉब्लम आती रहेगी, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, बट उसे मालूम है कि वो उसका बेसिक जॉब है. ये क्लैरिटी उसके दिमाग में रहती है. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ से फाइनेंस पर्सन को क्लियरली मालूम है कि मैंने किया हुआ काम कंपनी के गोल से कैसे कनेक्ट करता है. Whether he's accountant, manager, CFO, whatever, first thing and most basic thing about these employees is they know exactly how my job connects to the company goal. मेरा जॉब कंपनी के गोल से कैसे कनेक्टेड है, मैंने अच्छा काम करने से कंपनी को क्या फायदा होता है, ये उनके दिमाग में बहुत क्लियर रहता है. ये नंबर वन एस्पेक्ट है जो मैंने देखा है सक्सेसफुल एम्प्लॉयज का. नंबर टू is these people also know how their boss's job connects to the company goals. मतलब सिर्फ मेरा जॉब नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि मेरा बॉस का जॉब जो है वो कंपनी के गोल से कैसे कनेक्टेड है. सो इफ आई एम से एग्जीक्यूटिव इन एचआर डिपार्टमेंट, मुझे मालूम है कि मेरा जो मैनेजर है, एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर का जॉब जो है वो कंपनी के गोल से कैसे कनेक्टेड है, इसकी भी क्लैरिटी मुझे है. मतलब मैं जब मेरे डे टू डे वर्क के बारे में सोचता हूँ, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हाउ माई मैनेजर्स जॉब बिकम्स ईजियर बाई मी डूइंग दिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पीपल आर पीपल आर अवेयर दैट by me doing a good job and being aware of my manager's responsibilities, I'm increasing the effectiveness 2 times. तो ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ सक्सेसफुल एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक जो है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच आई हैव सीन इन अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय, he is also aware of his boss's job, his manager's job. So if the person is a sales executive, he knows the responsibilities of sales manager. He knows what will make sales manager successful. He not only knows what makes him successful, he also knows कि मेरे मैनेजर को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा. So the second part is he is aware of how his manager is going to be responsible for the company goals, and he works in alignment with that. The third part where I've seen successful employees having demonstrated this behavior is knowledge. वो अपने जॉब में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आते हैं. These people bring in extra knowledge from outside. It's not something which is given from within the company. They take efforts to go out, look at what is happening in the world, learn new things, and bring it back to the organization.
आई विल रिपीट इन हिंदी। तीसरी जो चीज है जो ये सक्सेसफुल एम्प्लॉयज करते हैं, ये खुद की नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये खुद के जॉब में लगने वाले एक्स्ट्रा नॉलेज जो बाहर से लेके आ सकते हैं, वो ये लेके आते हैं। Examples of this could be they go out and develop some IT skills. So today the whole world is moving on to IT. हर जगह पे ऐप बन रहे हैं, ERP इम्प्लीमेंट हो रहा है, नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, SAP आ रहा है। कंपनीज आर ऑलवेज चेंजिंग। लेकिन ये लोग बाहर जाके ये सीख के आते हैं। दे लर्न न्यू टूल्स, दे लर्न न्यू टेक्निक्स, बाहर के इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टडी करते हैं। दीज गाइज गो आउट, learn new tools, new techniques. They go out and see best practices in the industry. They find out how more mature companies are handling certain things. जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो ये बाहर जाके लीन मैन्युफैक्चरिंग सीख के आते हैं या लीन मैन्युफैक्चरिंग के आइडियाज लेके आते हैं। If you are talking about somebody, say in the finance department, they are going out, they are learning about trends happening in new finance technologies, new ways in which payment technologies are coming in. They come in with new ideas and then they propose it in the company saying, can we do this, it will help us. So the third area where I have seen employees successful is they go out, acquire knowledge, bring it back into the organization and add value. So that was the third area where I have seen successful employees uh, helping the organization and thereby becoming important for the organization. I move forward. Fourth thing which makes these people successful employees, and this has got nothing to do with the job or the responsibilities or learning or whatever. The fourth thing is they are simply nice people to be with. When I say nice people to be with, what do I mean? I mean that they are friendly, they interact well within the organization, they are understanding, they have good interpersonal relationship building skills, they have a positive attitude, enthusiastic, they bring in a lot of positive energy in the organization. चौथी चीज जो इन्हें सक्सेसफुल बनाता है, ये दिल से अच्छे लोग रहते हैं। मैंने से दिल से अच्छे लोग, ये फ्रेंडली रहते हैं, ये इजी टू अप्रोच रहते हैं, ये एक दूसरे को समझने में इनकी इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ स्मूथली कैसे काम, या इनकी बिहेवियरल ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो fourth most important thing is that these successful employees are friendly, understanding, enthusiastic people who bring positive energy. They also do not bring in negative energy. Matlab, in between people there are no fights. These are not the guys who get involved in fights. कंपनी में एक दूसरे के साथ क्लैशेस जो रहते हैं या ईगो टसल्स जो हो जाते हैं, इसमें आप इनको नहीं पाओगे। ये लोग छोटे मोटे पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, एक दूसरे को नीचे खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। These are not the kind of people you will find indulging in petty politics, indulging in groupism, pushing one person against the other. आप इस कैटेगरी के एम्प्लॉयज को जब आप देखोगे, you will not find them doing any of this kind. So that was the fourth area where I have seen employees who are successful. This is another area where I have seen their behavior. And the fifth and the last thing which I want to talk about is successful employees within organizations display trustworthiness and they display loyalty.
पांचवा जो एरिया है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज रहते हैं ये इनके ऊपर विश्वास आप कर सकते हो। ये कंपनी के साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। ये कंपनी को अपना लॉयल्टी दिखाएंगे, ये कंपनी को अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, ये कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कंपनी की जो इंटरेस्ट्स हैं, कंपनी के लिए जो महत्वपूर्ण है, इसी के ऊपर इनका नंबर वन प्रायोरिटी रहता है। सो the fifth area which I have seen in successful employees is trustworthiness. From small things to big things. So you assign them a small job and you tell them, I want this done by tomorrow. You can trust that it will be done by tomorrow. If you feel that something is confidential, it could be some formula about the company's product, it could be some commercial secret, it could be some competitor information, anything that you share with this person, it will not go out beyond what is safe for the company. That is what I mean by trustworthy. You can be sure that a job given to him will be done. There will be no excuses coming back saying, oh, I forgot, oh, ye mujhe nahi jama, or I didn't know. ट्रस्टवर्दी यानी जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इनको आप कोई भी काम दे सकते हो और आप विश्वास रख सकते हो कि ये काम होगा। और इसको अगर आपका कोई डेडलाइन है या ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप इनके साथ शेयर करते हो, ये कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ये जो ट्रस्टवर्दीनेस थ्री इयर्स अगर आप दिस इज very commonly seen as the successful trait I have seen across all companies. So I will summarize all the five skills which I have seen demonstrated by employees who become successful in companies. नंबर वन स्किल है कि ये अपनी जॉब को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें मालूम है कि ये जॉब कंपनी के गोल से कैसे कनेक्टेड है। They are aware of their own job and how it connects to the company goals. Number two area where I have seen successful employees are skilled in is उन्हें मालूम है कि मेरा बॉस का जॉब क्या है और मेरे बॉस के जॉब को कंपनी के जॉब से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं मेरे बॉस को कैसे सक्सेसफुल कर सकता हूँ। सेकेंड एरिया वेयर आई हैव सीन दैम। थर्ड एरिया इज ये लोग नॉलेज पे काम करते हैं, नए स्किल्स एक्वायरिंग पे काम करते हैं, दुनिया किधर जा रही है ये सीखते हैं, नए ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। दे एक्वायर न्यू स्किल्स, लर्न न्यू ट्रेंड्स, बिल्ड अप देयर नॉलेज, bring that value back to their company and to their role. Fourth area which I have seen is these are nice people. They are friendly, enthusiastic, positive, outgoing, interacting with people very well, not indulging in politics, not indulging in groupism, not bringing negative energy in the company. ये उनका ट्रेट है नंबर फोर। और पांचवा जो है, ये लोग ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और ये कंपनी को लॉयल रहते हैं, कंपनी को, मैनेजर को लॉयल रहते हैं। So these were the five things which I wanted to discuss as behavioral or attributes which I have seen in employees who are successful in companies. So it's now open for questions. If you have any questions, please type your questions in the comment box. I will pick them up one by one and we will talk about it. Okay, I have a question which has come in from
Prajakta, and the question says, please explain point number 2 again. Okay, so Prajakta, the second point which I mentioned was that successful employees know their boss's job. What I mean is they understand the job that their boss performs. So, to take an example, if there is a person working as a sales executive, he has his own sales target and he is delivering whatever work has been given to him. In addition to that, he also knows that his boss, which is the sales manager, so the sales manager would probably have multiple areas under him. He will have multiple targets for each area. Plus, he may also have responsibilities like new product addition, competitor information collection, marketing, sales, advertising. There could be 10 other things which his manager is responsible for. So, as a sales executive, he knows दिस इज माई मैनेजर्स जॉब. उन्हें ये मालूम है कि मेरा मैनेजर क्या क्या चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन दे आर aware of what their manager's job is, they are going to stretch a little bit and try and help the manager. He will go and say, um, sir, I know that you are also responsible for, say, advertising. तो एडवर्टाइजिंग में मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ क्या. सो व्हाट हैपेंस इज ही इज एबल टू look at higher responsibilities that the manager is carrying and understand how it connects with the company and also understands how I can help him. So he reaches beyond his जॉब स्कोप जो उसको बताया है कि आपका जॉब सिर्फ इतना है, उससे बाहर आके वो थोड़ा और करता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके मैनेजर के जॉब में ये सब आता है. तो ये जाके थोड़ा उधर का काम भी करने लगता है, वो सीखने लगता है, वो वैल्यू वो ऐड करता है अपने अपने जॉब में और अपने मैनेजर के जॉब में भी वो ऐड करते जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, ही इज मोर इफेक्टिव इन हिज डिपार्टमेंट. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Okay, good point. So, many times we feel managers do not give us credit of work done and he takes the credit himself. Okay, now I've come across this many times, both in my career as an employee and as also when I have been a consultant to companies. Many times this has come as a point that what if I do extra work and the credit is taken by the manager? Remember one thing, that um, the person who is doing the work, it is visible to everybody. You may work on one new idea and that new idea may be taken by the manager in his meeting with the management of the company or whatever. He can do it once, he may do it twice. But if you have this in your mind that this is the approach with which I will deliver my day-to-day work, in a very short period of time, all the people in the company, including the key people who need to know, they will come to know that this work was actually done by this person. So what you are looking at is a very short window, a very short period of time in which maybe your work will be presented by somebody else as his or her work. But if you continuously adopt this approach of understanding, okay, what is the company goal? What do I need to do? What is my manager's job? How can I add to it? The moment you start adding that,
आपके डे टू डे वर्किंग में लोग आपको नोटिस करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि यस, ये ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, इसको अपने जॉब से बहुत ज़्यादा मालूम है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 6 8 मंथ्स आपको वो चेंज दिखने लगेगा। ऑटोमेटिकली लोगों को भी पता चलेगा कि ये मैनेजर जो भी प्रेजेंट कर रहा है ये आता कहाँ से है। So there are two ways to look at it, whether you want to look at it short term or you want to look at long term. अगर आप long term देखोगे तो you will learn to ignore these things where people are taking your work and claiming it their own. Very soon it will be out in the open, because जब आप किसी और का वर्क स्टील करते हो, आप सिर्फ वो एंड प्रोडक्ट को स्टील कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो थिंकिंग प्रोसेस है ये आप नहीं स्टील कर सकते, और ये आप रिप्लिकेट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड गॉसिपिंग। हाउ टू अवॉइड गॉसिपिंग, अभी आप अगर खुद के बारे में बात कर रहे हो तो वेरी सिंपल, मत करो, गॉसिप मत करो। क्योंकि गॉसिप में से यू हैव दैट मोमेंटरी एक प्लेजर रहता है, या मोमेंटरी एक मेंटल रिलीफ रहता है जब हम दूसरे के बारे में नेगेटिवली बात करते हैं। बट लॉन्ग टर्म, if you want to be a successful employee in the company, gossiping will only pull you down. So first thing, how to avoid gossiping? Don't do it. मत करो। How to avoid gossiping in the company? आप नहीं रोक सकते हो, ये ह्यूमन बिहेवियर है। You will always have some people who will want to use gossip as a means to relieve their internal stress, relieve their internal tension, or many other things because of which they do gossiping. So, you as an individual, don't gossip. Others are gossiping in the company. Yes, they will gossip. Gossip is a part of human nature. You can't stop it. आप उससे दूर रहो। आपको अगर सक्सेसफुल एम्प्लॉय बनना है तो आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो कि मेरा काम कंपनी के काम से कैसे कनेक्टेड है, मेरा काम मेरे मैनेजमेंट से कैसे कनेक्टेड है। You be nice to people regardless of how they are with you, and that's the only way you can stay out of it. You cannot avoid gossip in companies. It's a part of human nature. आप नहीं कर सकते। Next question, how to avoid politics in a company between colleagues? पॉलिटिक्स ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड वर्ड है। पॉलिटिक्स जो है, एक्चुअली इसको गलत नाम दिया है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है। इफ यू आर क्लियर अबाउट हाउ योर वर्क विल मेक योर डिपार्टमेंट सक्सेसफुल एंड योर कंपनी सक्सेसफुल, अगर आप उस पर फोकस्ड रहोगे कि ये मेरा काम है, ये मेरे डिपार्टमेंट का काम है, ये मेरे कंपनी का गोल है, इसके अलाइनमेंट में आप अगर रहोगे, and you have to continuously be in dialogue with your manager, with your manager's manager, with the MD, whoever, however big your company is, ये alignment को अगर आप clearly समझ जाओगे, if you understand this alignment between your job, company manager's job and company goal, if this alignment is clearly understood and you stay focused on it in whatever 8 10 hours you spend at work, you will realize that all the other इंटर कंपनी टसल्स जो रहते हैं, दो लोगों के बीच में जो पुश पुल रहता है, आप जब इस अलाइनमेंट में रहोगे तो दीज इंटर कंपनी पॉलिटिक्स विल नॉट अफेक्ट यू। यू विल रियलाइज दैट आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। Nobody will be able to stand in front of you and push you back or push you down for whatever reason, because when you are aligned to the company goal, nobody can stand in front of you. You will find that everybody in your
हायरार्की इज सपोर्टिंग यू। जब आप कंपनी के गोल से अलाइंड रहते हो तो कोई भी पॉलिटिक्स आपके काम में बीच में नहीं आ सकता है, और आपको इमीडिएटली दिखेगा कि कंपनी का सीनियर से सीनियर मैनेजर आपको सपोर्ट करने आ जाता है। दैट इज अ फैक्ट। यू ट्राई इट आउट एंड यू विल नो दैट इट वर्क्स। How should two managers handle differences of opinions and avoid interdepartmental conflicts? Is what Latika is asking. How should two managers handle differences of opinion and avoid interdepartmental conflicts? So, as a manager, the very role as a manager means that you are responsible to deliver a certain scope of work which belongs to a department. तो एक तो ये दोनों मैनेजर्स जब साथ में बैठते हैं, दोनों को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम दोनों कॉमन कंपनी गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो कंपनी का गोल अगर कॉमन है तो हम लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है, इट कुड आइदर बी कि आइदर मैं कर रहा हूँ या तुम करोगे, मेरे पास लोग नहीं है आप करो, या फिर ये मेरा काम नहीं है ये आप करो। I'm coming back to the topic of the discussion, which is successful employees. तो सक्सेसफुल एम्प्लॉयज में ये दो मैनेजर्स जो रहते हैं, इनमें से जो सक्सेसफुल एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, इसके दिमाग में ही इज क्लियरर इन हिज माइंड दैट the goal of the company is more important than my ego tussle with this person. I will be more successful in this company if I understand that I am here to deliver the goal of the company and not listen to whatever he has to say about whatever. He will say, तुमको नहीं करना है, no problem, I will do it. Maybe in the shorter term, he will have to spend more effort on it. It is in the shorter term. लेकिन जब वो ऐसे करने लगता है तो उसका जो मैनेजर रहता है वो इमीडिएटली समझ जाता है कि इसको कोई भी आप जॉब दो, he will be able to deliver. He will go beyond his scope, pick it up and do it. Why? Because he knows it is aligned to the company goals. This is how successful employees behave, and that behavior, when it comes out, they start growing more and more. And then later people say, अरे ये चमचा है, ये करता है, ये वो करता है, ये यू नो मैनेज इसके बॉस के घर का काम करके देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। he is able to go beyond his stated job, understand कि कंपनी के लिए ये important है और ये मैं करूँगा। This is how successful employees think and work. Okay, next question. We are already beyond the time, so I will take this last question. Sometimes executive level candidate has all these five things, but his manager does not have a positive approach towards job. So in this case, how does the executive person become a successful employee? Okay, that's a question from Mahesh. So Mahesh, good question. Um, it is, it's a very easy thing to say that I am good, but my boss is bad. Up, you remember one thing, that in a company there is only one truth, and that truth is the company goal. People come, people go. People stay and thrive and survive and succeed only when they are aligned to the company goal and objective. So if the executive is aligned to the company goal, if the executive is aligned to the company success, if he is aligned to the department objectives, to his manager's objectives, you will very fast find that the manager is slowly phased out and the executive grows to be the manager. And this happens.
If the executive is junior, he will be groomed and he will become the manager, because these five capabilities all put together are the basic building blocks of leadership. अगर ये पांचों कैपेबिलिटीज कोई दिखा रहा है, कोई एग्जिबिट कर रहा है, भले ही वो जूनियर हो, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। एंड अगर उसका मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बहुत ही जल्दी कंपनी के मैनेजमेंट को ये दिखने लग जाता है, और वो जूनियर को ऑटोमेटिकली वो मैनेजर के इसमें पुश हो जाता है, और वो मैनेजर कंपनी से बाहर हो जाता है या उस डिपार्टमेंट से बाहर हो जाता है। Now, the other side of it is when you have such employees in your team and the manager is also a good performing manager, the manager also grows. So manager का growth path faster हो जाता है, employee का भी faster हो जाता है. So um, the answer to your question is, if the manager is not having the right approach to such team members, very soon you will realize that the manager will be out of the path, because the only truth in the company is the goal of the company and the direction of the company. It's been nice talking to all of you. I will share with you um, our website. You can visit us, know more about us. You can also visit my YouTube channel. There are many talks on various topics which you could also visit and listen to it on YouTube whenever you have the time. Um, if you wish to connect with me, you can also direct message me or email me. My details are here in the comment box. So it'll be great to be connected with you, to be able to answer any questions you have on this topic. And I really hope that with these inputs, all of you would be able to move towards becoming successful employees and growing in your careers wherever you're working. So again, thank you so much for joining this Facebook Live session. It's been a pleasure talking to all of you. Be ready for our next Facebook Live. Looking forward to see you after 2 weeks. So 2 Saturdays from today will be our next Facebook Live, and be connected with us on Facebook to know what the topic is, and come ready with your questions. Happy to discuss.